we need to understand the essentials of a valid contract. Essentials means that what are the things that you will be looking in a valid contract. And what is a valid contract? For example, agreements तो होते रहते हैं, but the idea is कि अगर आपने कोई contract किया और एक बंदे ने उसका प्रॉमिस जो है वो फुलफिल नहीं किया जो उसने प्रॉमिस किया था, अब आप ये कॉन्ट्रैक्ट को लेके जाते हो कोर्ट में. जब कोर्ट में लेके जाते हो तो कोर्ट एक्चुअली इसको सबसे पहले जो चीज देखेगी वो ये देखेगी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या वैलिड नहीं है. इफ इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट द कोर्ट इज गोइंग टू एंटरटेन इट. इफ इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट the court is not going to entertain it. So court कैसे determine करेगी कि valid है contract या नहीं? By looking at these things, because these are the essentials of a valid contract. Now when you read different books, different notes on internet or something, you might not find 10 headings. 1 to 10 नहीं होंगी, हो सकता है उसमें कुछ लोगों ने 6 हेडिंग्स दी हो, कुछ ने 7 दी हो, तो दे कैन बी डिफरेंट. वो डिफरेंट किस लिए है? कुछ लोगों ने इनको मर्ज कर दिया होता है, कुछ लोगों ने इसको नहीं समझा होता कि इंपॉर्टेंट है, मिस कर देते हैं. बट हम इसमें 10 में सारी की सारी चीजें कवर करेंगे. We have a separate chapter for most of these headings. For example, offer and acceptance पे separate पूरा चैप्टर पढ़ेंगे. लॉफुल कंसिडरेशन पे पूरा चैप्टर है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज पे, फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट पे, एंड देन वी विल आल्सो टॉक अबाउट लीगल फॉर्मेलिटीज एज अ सेपरेट चैप्टर. बट यहाँ हम सिर्फ इसकी बेसिक्स थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें बेसिक आइडिया हो जाए, जब हम चैप्टर्स की तरफ मूव करें तो हमें पे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. नाउ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट इट हैज एटलीस्ट 2 parties. Why 2 parties? Because one party will be making an offer and the other party will be accepting the offer. अगर ये मैकेनिज्म नहीं है तो फिर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बाय सेपरेट पार्टीज नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड नहीं होगा. नाउ द पर्सन हु इज मेकिंग द ऑफर और प्रपोजल विल बी नोन एज द ऑफरर. बंदा प्रपोजल कर रहा होगा, प्रपोज कर रहा होगा या ऑफर कर रहा होगा किसी चीज की, उसको ऑफरर कह देंगे. एंड टू whom the offer is being made will be known as offeree. So if I am asking somebody that I want to sell my car for 400,000, I am the offerer because I am making the offer. And जिसको मैं ऑफर कर रहा हूं वो ऑफरी हो जाएगा. So there is an offerer and there is an offeree. One person cannot make an offer to himself. और जब तक ऑफर पे एक्सेप्टेंस नहीं आएगी या एक्सेप्टेंस के लिए ऑफर नहीं होगी तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो सकता. अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें वो फॉर्म आप समझ लें कि हो गया है, इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, ए ऑफर्स to sell his car for 400,000 rupees to C, and C accepts it. So A and C are actually making the contract. A is the offerer, C is the offeree. So पहला element जो है necessary element, that is that must be an offerer and there must be an offeree. Now, second thing is the intention to create legal relationship. When 2 parties enter into an agreement,
their intention must be to create legal relationship between them, otherwise there is no contract between them. आप फॉर एग्जाम्पल किसी जगह अपने फ्रेंड के साथ बैठे हैं, उसने आपका मोबाइल फोन देखा और वो कहता है कि बड़ा अच्छा मोबाइल फोन है, अगर तुम मुझे 1,000 रुपए का ये बेच दो तो, और आप उसको कहते हो नहीं कोई बात नहीं तुम फ्री रख लो. Now one person made the offer, the other accepted it, but there was no intention to create legal obligation or legal relationship. You must be joking or you must be saying it for the sake of courtesy. So इसमें कुछ seriousness involved नहीं है. That means आप वैसे ही बात कर रहे थे. तो contracts के लिए it is important that you need to have the intention to create legal relationship. Intention नहीं है, otherwise कोई बात कर रहे हैं, so that's not considered to be an offer or acceptance or a contract. So when A is offering to sell his car for 400,000 rupees to C, and C accepts the offer and they are serious about it, knowing that if they will not fulfill the promise, the court can punish them. The court can make it enforceable. If this is the case, that they are serious and they have a complete understanding that if one of them is not going to fulfill it, he or she can face the consequences. That is the intention to create legal relationship. The third element is the lawful consideration. Two words, consideration and lawful. First of all, what is a consideration? Consideration means advantages or benefits moving from one party to the other party. For example, if one party is selling a house for 10 lakhs of rupees, एक पार्टी के लिए हाउस इज द कंसिडरेशन, जो बेनिफिट उसको मिलेगा, दूसरी के लिए 10 लाख रुपया 10 lakhs इज द कंसिडरेशन जो उसको मिलेगा. So these are the considerations. So if there is a contract of this sort, it is fine, it has the consideration. Now let's look at the other example, killing a person for some amount of money. हमने यहाँ देखा कि monetary considerations are fine, इसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, they are lawful, but killing a person is not lawful. So consideration तो है दोनों तरफ से, but one consideration, that is killing of a person, is unlawful. It is not lawful. So for a contract to be a valid contract, there must be a consideration and there must be a lawful consideration. Unlawful consideration नहीं होनी चाहिए. It might be an agreement, but it is not giving rise to any legal obligation. Then we have the capacity of parties as our fourth essential. Capacity of parties or competency. कई दफा आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हो, you are not capable of entering into a contract. For example, the parties are only competent to enter into an agreement if they fulfill these three conditions. One condition, that they have the age of majority. In Pakistan, the age is 18 years. In different countries, the age might be different, slightly different. So, 18 साल से बड़ी एज के हैं तब आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. अगर आप 18 साल से कम हैं तो you will be known as minor, and minors cannot enter into contract. Second, you need to be of sound mind. Sound mind means that you are capable enough of understanding everything. तो फ्रॉड की बेस पे फिर लॉ उनको जो है वो डिस्क्वालीफाई कर देता है, अपने फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स आइंदा नहीं करने. सो ये जो है ये कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का. एट द सेम टाइम आपका जो रिटायर्ड पर्सन है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो सीईओ था और वो कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा था, तब तक तो ठीक है. द मोमेंट ही और शी इज रिटायर्ड, they do not have the capacity, they do not have the competency to make a contract on behalf of the organization.
Then we have another essential which is the free and genuine consent. Free and genuine consent इसलिए कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से गन पॉइंट पे साइन करवा लेते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ ना, वो तो एक्चुअली उसकी जो कंसेंट थी वो जेन्युइन भी नहीं थी, फ्री भी नहीं थी, वो तो अपने फोर्सफुली उससे साइन करवाए हैं। So, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते। There must be a free and genuine consent of the parties to the agreement. किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं उन पे होना चाहिए। So there must be an absence of free consent and these things are coercion। पहली बात, coercion क्या चीज है कि अगर किसी बंदे को आपने फोर्स यूज करते हुए उससे साइन करवाए हैं या उसको कॉन्ट्रैक्ट में लेके आए हैं, लेट सपोज आपने गन पॉइंट पे उससे साइन करवा लिए हैं, this is not a valid contract। Then you have the undue influence। For example, एक किस्म का इमोशनल जो प्रेशर है, एक्सेसिव परसुएशन, इतना बार बार परसुएट करना उसको। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेरेंट्स टू चाइल्ड एंड स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट मैरिजेस, तो उसमें ये आपको नजर आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। आपका फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट नहीं होता बट स्टिल बिकॉज योर पेरेंट्स आर सेइंग और इस तरीके से, सो एक्सेसिव परसुएशन जब करते हैं तो दैट इज also known as undue influence। We will talk about this in detail when we'll study this chapter। Then there is a fraud। अगर कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड से किया है तो उसमें भी फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट नहीं होती। वो किस तरीके से, फॉर एग्जांपल आप एक घर खरीदने गए हैं और वो घर एक्चुअली क्रैक्ड है, वो घर को पेंट कर देता है और आप जब उससे पूछते हो कि ये घर ठीक है तो कहता है ये 100% ओके है, इसमें कोई इशू नहीं है। नोइंगली आपको वो गलत बात बताता है, नोइंगली, तो वो फ्रॉड है, उसकी इंटेंशंस इन्वॉल्व होती हैं आपको डिविएट करने में। एंड इसी से मिलती जुलती चीज होती है मिस रिप्रेजेंटेशन, बट इसमें इंटेंशंस इन्वॉल्व नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल कोई कार है जो आपके फादर की कार है और बच्चा उसको ले जाता है और कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट करके बगैर अपने फादर को बताए उसको पेंट करवा के वापस ला के गराज में खड़ी कर देता है गाड़ी। फादर को नहीं इस चीज का पता एक्सीडेंट कभी हुआ है। अब फादर किसी के साथ कोई डील करने लगते हैं गाड़ी की और जो बायर है वो पूछता है कि कार एक्सीडेंटेड तो नहीं है, तो अननोइंगली फादर कहते हैं कि बिल्कुल भी एक्सीडेंटेड नहीं है, इट्स इन 100% गुड कंडीशन। अब जो स्टेटमेंट वो दे रहे हैं स्टेटमेंट तो गलत है, कार इज एक्सीडेंटेड, बट ही डजंट नो इट, he doesn't have the awareness, but whatever he is saying is not true। so intentions involved नहीं है, unintentionally deviate किसी को आप करते हो तो that is known as misrepresentation। फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन दोनों से अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड। एंड द लास्ट वन इज द मिस्टेक। समटाइम्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग इन द राइट वे। फॉर एग्जाम्पल आपके गराज में गाड़ी खड़ी की हुई आपने और आप 8 बजे ऑफिस चले जाते हैं, आप वहां अपने कोलीग से 10 बजे ये बात करते हैं कि मैं अपनी गाड़ी बेचना चाह रहा हूं और आपका कोलीग कहता है ठीक है फाइन मैं गाड़ी खरीदना चाह रहा हूं सब कुछ, एंड यू मेक ऑल द डील। 9 o'clock यहां से गाड़ी जो है वो हो गई है, बट यू हैव नो आइडिया, you are mistaken and you make the contract। so this kind of contract will also not be having free and genuine consent because mistake ho rahi hai isme in some kind of understanding। then we have the lawful object, which means lawful objective। sometimes it is written as lawful object but it means lawful objective। the objective of the agreement must be lawful।
example, it should not be illegal, immoral, or opposed to public policy. Now, normally, if you rent a shop, it's a lawful contract, it doesn't have any problem. But अगर आप इसलिए रेंट कर रहे हैं शॉप कि आपने वहां स्मगल्ड गुड्स को स्टोर करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो आपका ठीक है, बट जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, जिस वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज नॉट लॉफुल. या आप कहते हो कि घर रेंट करना है और उसमें आप ऐसे लोगों को पनाह दोगे जो किसी न किसी केस में मुलव्वस हैं. तो घर रेंट करना इज फाइन, बट ऐसे लोगों को पनाह देना इज नॉट फाइन. सो लीगल आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो नहीं होना चाहिए. और आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि यू आर गोइंग टू गिव 10,000 rupees to somebody and you will ask him or her to beat some other person. Again, your objective is not right to make the contract. Then it should not be immoral. Immoral जो है वो illegal तो नहीं होता, but immoral हो सकता है कई दफा. Example, divorce करना is your legal right, कोई ऐसा इसमें इशू नहीं है, you can divorce अगर आपको चीजें ठीक नहीं लग रही. बट अगर कोई आपसे ये प्रॉमिस करता है, कोई आपसे ये कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं तुम्हें 1,00,000 रुपया दूंगा और तुम अपने स्पाउस को डिवोर्स कर दो, ये अब देखो, डिवोर्स करना तो उसका लीगल हक है, इसमें इलीगल तो कोई बात नहीं, वो डिवोर्स कर सकता है. बट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना इज इमोरल, which is not a lawful objective. And then it should not be opposed to public policy. इसकी सिंपल एग्जांपल ये हो सकती है, देखें, विटनेस एज अ विटनेस प्रेजेंट होना कोर्ट में इज फाइन, आप हो सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है. तो अगर आप किसी से ये कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि आप उसको पैसे दोगे, वो आपके लिए विटनेस एज अ विटनेस प्रेजेंट होगा, so that is also opposing the public policy, which is not right. So the objective of the contract should always be a lawful objective. Then we have some contracts which are declared void. वो आप country में नहीं कर सकते. For example, A promises to pay 20,000 rupees to B if B closes down his business. It is not allowed because ये trade को, competition को खत्म करता है. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, इन मेनी कंट्रीज बेटिंग इज अलाउड, लीगल है, कोई इशू नहीं है. बट इन पाकिस्तान, इफ यू प्रॉमिस टू पे समबडी, इफ पाकिस्तान विंस, यू आर गोइंग टू गिव दैट पर्सन 1,000 rupees. इसका मतलब ये है कि आप बेट लगा रहे हैं. इट इज नॉट अलाउड. दीज काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिक्लेयर्ड वॉइड. वी हैव द सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स. समटाइम्स जब हम टर्म्स एंड कंडीशंस लिख रहे होते हैं, वी आर नॉट क्लियर. फॉर एग्जांपल, ए प्रॉमिस बी टू सेल 20 बुक्स, व्हिच बुक्स, एंड साथ आप कहते हो फॉर सम अमाउंट ऑफ मनी. दिस सम अमाउंट ऑफ मनी एंड सम बुक्स इज नॉट सर्टन. तो क्लियर होना चाहिए कि कौन से बुक्स के टाइटल्स हैं और कितने पैसे की एग्जैक्टली आप बेच रहे होंगे. इफ इट इज नॉट क्लियर, तो ये जो है वो सर्टेनिटी नहीं आती उसमें. पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. फॉर एग्जांपल, बहुत दफा आप ये प्रॉमिस कर रहे हो तो किसी कि मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा. नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ परफॉर्मेंस व्हिच इज इम्पॉसिबल टू बी परफॉर्म्ड. अनदर एग्जांपल कैन बी ए प्रॉमिस टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर 20,000 इन 5 days, बट थर्ड डे पे जो घर है वो किसी न किसी तरीके से बर्न हो जाता है, तो परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं होती. देन देयर द लास्ट वन इज द लीगल फॉर्मेलिटीज. इसका मतलब क्या है कि नॉट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर और कैन बी वर्बल. लीगल फॉर्मेलिटीज का ये मतलब है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए आपको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज भी साथ फुलफिल करनी पड़ती हैं. फॉर एग्जांपल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है उसमें आप वर्बल नहीं कर सकते. उसमें आपको स्टैम्प पेपर पे लिखना है, दोनों लोगों को वहां प्रेजेंट होना है गवर्नमेंट ऑफिसर के सामने, दोनों को बयान देने हैं, दोनों को विटनेसेस लेके आने हैं, दोनों साइन करेंगे, दोनों गवर्नमेंट की फी पे करेंगे, एक सर्टेन अमाउंट के स्टैम्प पेपर पे आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे.
सो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए फॉर्मेलिटीज, जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो डिफाइंड होती हैं। अगर वो लीगल फॉर्मेलिटीज आपने फुलफिल नहीं की तो इसका मतलब है आपने वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं है। सो दीज आर द essentials of a valid contract.